Hello students, today we are going to understand one of the most important topic in English grammar, that is preposition. You will find this topic in different tests, exams, interview tests and job tests. So we'll try our best to understand this in a very proper way. I will be dividing my lectures into parts, and today is the first part, that is we can say introductory part. So in this today's lecture we will try to understand some basics of preposition. So be with us and we will learn a lot from this video. First of all, what is the definition of preposition? How can we define preposition? According to Oxford Dictionary, preposition can be defined as a word or a group of words. A word or a group of words such as in, from, to, out of, on behalf of, used before a noun or a pronoun to show place, position, time and method. So preposition जेका है वो place भी शो कंदी आहे, कंहिं शइ जी पोजीशन बि शो कंदी आहे, टाइम बि शो कंदी आहे, ऐं उन खां अलावा उहो मेथड बि शो कंदी आहे. And we also define preposition as it is a word that joins a noun or a pronoun. So let's take an example. The cat is under the table. So in this sentence, under is a preposition. It is used as a noun as well as a verb and preposition. So you must remember that when we use a preposition, we have to use object of the preposition. That can be a noun or a pronoun. So here we can see that there is a noun. The school is near the park. Near is a preposition and park is a noun. And we believe in him. So in is a preposition and him is a pronoun. So अगर जेकॾहिं कंहिं बि preposition खां बाद में noun या pronoun यूज़ थियल हूंदो, इट मीन्स कंहिं वर्ड खां बाद में त उहो preposition आहे. अगर कोई बि noun या pronoun यूज़ न आहे थियल त उहो adverb थी वेंदो, राइट. Some prepositions are used for showing place, and these prepositions are called prepositions of place. For example, in, on, at, they are prepositions and they show place. For example, I work in a hospital. So in is showing the place, that is hospital. They are on the hills. So on is a preposition that is showing the place where something or someone is. I am at the bus stop, so it is also a preposition for place. There are some prepositions that are used for showing the direction. For example, towards, into, through, etc. They were going towards the east. So towards is showing the direction. The train passed through the tunnel. Through जिको है ते यो direction तो दसे. The prepositions direction ॾसण लाइ बि इस्तेमाल थींदा आहिनि. By जेका preposition आहे उहा is a agent तौरु यूज़ थींदी आहे. असां passive voice में बि by खे यूज़ कंदा आहियूं to show agent. The match is won by Pakistan. हाणे पाकिस्तान खे as a agent show करण जे लाइ by यूज़ थींदी आहे, ठीकु. This glass is broken by Ali. In passive voice we use this by to show an agent. Devices या instruments जे लाइ बि असां prepositions इस्तेमाल कंदा आहियूं. For example, on, by, with, they are prepositions used for devices or instruments. For example, we work on computer. So on computers, on is a preposition. We see four things by a telescope. By is preposition. Some prepositions are used with the verbs, and they are called prepositional verbs or phrasal verbs. They are also called, and they are look at, look after, laugh at, take up. जॾहिं कंहिं बि verb सां असां का preposition use कंदासीं त उन जी meaning उन हिसाब सां change थींदी. For example, look at जी meaning अलॻि आहे, पर look after जी meaning वरी अलॻि आहे. Look at माना कंहिं शइ ॾांहुं ॾिसणु,
but look after means to take care. Look into जी माना लॻिया, look after जी माना लॻिया, look for जी माना अञा लॻिया. So जॾहिं बि असां कंहिं बि verb सां preposition use कंदा आहियूं, different prepositions सां उनजी meaning different थी वेंदी. So they are called phrasal verbs. Alright? Some prepositions are used for showing time, and they are called prepositions of time. And these prepositions are in, on, it. Whenever we use on, we use on for showing the days. On days we use on, and for showing clock time we use 8, and for seasons, for months and years we use in. Okay, in is used before parts of the day, like in the morning, in the evening, in the afternoon, but at night. Night sa in nasi, in the night na chavnasi, such nasi at night. Baki morning, evening and afternoon sa in use, you know. For example, I always go to school in the morning. She has English lesson in the evening. I will come in the afternoon. महीननि जा जेकॾहिं नाला हूंदा त उन्हनि ते बि असां इन हणंदा आहियूं. शी वॉज किल्ड इन मई, आई विल कम इन जनवरी. सीज़न्स ते बि इन हणंदा आहियूं. इन द समर, इन द विंटर, आई वेंट टू ज़ू इन समर. ईयर्स जेके आहिनि साल शो करण लाइ असां इन यूज़ कंदा आहियूं. डिकेड्स मतिलबु जीअं 10 साल जो अक्सो हुजे, 1980s और इन 1820s. त जॾहिं डिकेड शो कंदासीं त उन में बि असां इन यूज़ कंदासीं preposition. It is used for showing a clock time. जॾहिं बि घड़ियाल जो टाइम हूंदो आहे, जीअं 8 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock, असां उते 8 यूज़ कंदा आहियूं. 8 सनराइज़, हमेशह 8 सनराइज़ यादि करे छॾियो. सनराइज़, सनसेट, इन्हनि ते असां 8 यूज़ कंदासीं. नाइट सां असां 8 यूज़ कंदा आहियूं. 8 हॉलीडेज़ पीरियड्स जेके हूंदा आहिनि, जीअं 8 ईद, 8 वीकेंड, 8 डिनर टाइम, इन्हनि ते बि असां 8 यूज़ कंदा आहियूं. 8 प्रेज़ेंट एंड 8 सेम टाइम, इहे फ्रेज़िस यादि करे छॾिबा. त हमेशह 8 सेम टाइम हूंदो आहे, ऑन सेम टाइम न हूंदो आहे, या 8 प्रेज़ेंट हूंदो आहे, ऑन प्रेज़ेंट न हूंदो आहे. सो इहे अहिड़ा prepositions आहिनि जेके असांखे यादि करणा आहिनि. On is used for days of the week, like on Monday, on Saturday, and dates like on 20th May, on 3rd January. Some prepositions are used for showing position, and some are used for showing a movement. Prepositions position जे लाइ भी यूज़ थींदियूं आहिनि, मतिलबु कहिड़ी शइ किथे आहे. Position means where something is, and movement means where something is going. का शइ जेकॾहिं चुरपुर थी करे मूवमेंट में आहे त असां हुनजे लाइ अलॻि preposition बि यूज़ करे सघूं था. या असां का शइ अगरि मूवमेंट नथी करे ऐं रेस्ट में आहे, पोज़ीशन में आहे, त बि असां हुनजे लाइ preposition यूज़ करे सघूं था. Like the ball is under the chair means the ball is in the rest. It's showing the position. But movement की शो कंदो, the ball rolled under the chair, मतिलबु उहो हुनजे हेठां हलियो वियो, हिते इहा मूवमेंट शो थो करे. इन ऐं ऑन इहे ॿई prepositions आहिनि जेके पोज़ीशन शो कंदियूं आहिनि. जीअं ॾिसो एग्ज़ाम्पल आहे, द मैनेजर वॉज इन द ऑफिस. हिते मैनेजर जी पोज़ीशन शो थो करे, त वेयर ही इज़, हू हुते किथे वेठल आहे. द पेपर्स आर ऑन द टेबल, इहो बि हिते पोज़ीशन शो थो करे. पर अगरि इन टू यूज़ कंदासीं त उहो मूवमेंट थी वेंदी. द फ्रॉग फेल इन टू द वेल. हाणे इन में फ्रॉग जी जेका आहे जंप करण वारी जेका आहे, या उन में अंदरि किरण वारी मूवमेंट आहे, उहो मूवमेंट शो थो करे preposition into. So into is used for showing the movement. इन तरीक़े सां ॿिया prepositions बि आहिनि जेके मूवमेंट शो कंदा आहिनि. जीअं ओवर आहे, या थ्रू आहे, इंटू आहे, आउट ऑफ आहे, इहे मूवमेंट शो कंदा आहिनि. We have to remember these phrases with in, on or at. हमेशह in the phone box,
or in the kitchen, swim in the pool, in Shirley Road, in New York, in America. So अगर का place हूंदी या वॾी शहर हूंदो त असां in use कंदासीं. अगर का नंढी place हूंदी आहे त असां it use कंदा आहियूं, like at the bus stop or at the party and at a house. ऐं on असां use कंदा आहियूं जीअं ॾिसो floor आहे, on the floor, on the door and on the street. In US it's said on the road, as a village on this road. इन तरीक़े सां असां in on ऐं it use करे सघूं था. We have to remember these phrases. त जॾहिं बि इहे phrases हूंदा आहिनि त असांखे उते in ई use करणी पवंदी आहे. जीअं ॾिसो in prison आहे, in the lesson, in a book, in a photo, in the country, in the middle, in the back front or back or front of the car, in a queue or in a line or in a row. त असां इन ते in use कंदासीं. On ऐं ही phrases आहिनि जेके असांखे यादि करणा आहिनि त इन्हनि ते on use थींदो. On the platform, on the form, on the page, on the screen. या इनखे असां ईअं बि चई सघूं था on the television and drive, on the right side, on the back of an envelope, then on the island. इन्हनि ते असां on use कंदासीं. इहे phrases असांखे ज़हन में रखी छॾिणा आहिनि. 8 कहिड़नि phrases सां यूज़ थींदी आहे. जीअं ॾिसो काई बि एयरपोर्ट हुजे, बस स्टॉप हुजे, स्टेशन हुजे, उन ते असां एट यूज़ कंदा आहियूं. जीअं एट द स्टेशन, एट होम, एट वर्क, एट द साइड, एट द सी साइड, एट बैक ऑफ द रूम, एट द एंड ऑफ अ कॉरिडोर. इन्हनि में असां एट यूज़ कंदासीं. इन फ्रंट ऑफ जो छा मतिलबु हूंदो आहे? अॻियां. ऐं बिहाइंड मतिलबु पुठियां, पोयां. जीअं ॾिसो ही cyclist is in front of the bus, त ही अॻियां आहे, so that's why we say that cyclist is in front of the bus. But here the cyclist is behind the tractor. So behind मतलब पुठियां ऐं in front of मतलब अॻियां, आगे और पीछे. So across and through यूज़ थींदा आहिनि. अगरि असां कोई रोड वग़ैरह आहे ऐं उन मां रोड क्रॉस था कयूं ऐं उतां डायरेक्ट असां वञूं पिया था, सो इन दिस सिचुएशन वी यूज़ अक्रॉस. शी इज़ रनिंग अक्रॉस द रोड, वी रेन अक्रॉस द रोड. पर अगरि का अहिड़ी शइ आहे जंहिंजे हिकु साइड ॾांहुं वञी करे ऐं ॿी साइड ॾांहुं निकिरी अचे, सो इट कैन गो थ्रू. So it goes from one side and then comes out of from other side. Then उन सिचुएशन में असां थ्रू यूज़ कंदा आहियूं. जीअं का टनल वग़ैरह आहे या डोर आहे या को नंढो होल आहे, उन में असां थ्रू यूज़ कंदा आहियूं. द कार्स आर गोइंग थ्रू द टनल, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, राइट. त इहो डिफरेंस आहे अक्रॉस ऐं थ्रू यूज़ करण में. अलॉन्ग स्ट्रीट, रिवर या रोड हूंदो आहे, जॾहिं असां उन सां गॾोगॾु वॉक कंदा आहियूं या हलंदा आहियूं, त उन में बि असां अलॉन्ग यूज़ कंदा आहियूं. वी वॉक अलॉन्ग द रोड, राइट. राइट, इन दिस सेंटेंस ट्रेवर इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट. पास्ट यूज़ कंदा आहियूं मतिलबु का शइ ॿी शइ जे अॻियां गुज़रे थी, को ऑब्जेक्ट उतां गुज़री हलियो थो वञे. द कार इज़ गोइंग पास्ट द हाउस, मतिलबु उन घर जे अॻियां गुज़री वञण खे असां पास्ट यूज़ कंदासीं. अमंग बिटवीन, इहो ईज़ी आहे, असां पढ़ंदा आया आहियूं फ्रॉम सिंस प्राइमरी एजुकेशन. त अमंग जेको आहे घणनि शयुनि जे विच में हूंदो आहे, यूज़ थींदो आहे. ऐं बिटवीन ॿिनि शयुनि जे विच में. इफ देयर आर टू थिंग्स वी यूज़ बिटवीन. इफ देयर आर मोर देन टू थिंग्स वी यूज़ अमंग. ऑलराइट. सो अगरि ईअं चऊं द हाउस इज़ अमंग द ट्रीज़, मीन्स देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज़ एंड द हाउस इज़ अमंग देम. And if there are two things like Memphis and New Orleans, ये ॿ शयूं उन्हनि जे विच में आहे त उहो जैक्सन आहे. त here we use between. अपोज़िट जो छा मतिलबु हूंदो आहे? अपोज़िट हूंदो आहे आम्हूं साम्हूं हिक ॿिए जे, फेस टू फेस. लाइक जेसिका इज़ सिटिंग अपोज़िट एंड्रयू, सो दे आर सिटिंग अपोज़िट टू ईच अदर, फेस टू फेस आहिनि. अराउंड हूंदो आहे मतिलबु कंहिं शइ जी चौधारी फिरणु. लाइक ज़मीन सॼी चौधारी फिरंदी आहिनि, त उन जी चौधारी राउंड जेको आहे न, राउंड मतिलबु गोल, चौधारी फिरणु, इनखे असां अराउंड यूज़ कंदा आहियूं प्रीपोज़िशन. दे आर रनिंग अराउंड द ट्रैक, और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन.
Alright. Into and out of. These both prepositions are used for showing movement. अगर कहीं शे में इंटर थियणो आहे जंप इनटू और डाइव इनटू अगर कहीं शे में बाहर थो निकिरे त पोइ गेट आउट ऑफ Sarah is diving into the water and Tom is getting out of the car. So into means अंदर में and out of मतलब बाहर. Above ऐं below. सिंपल आहे अबव जेको आहे कंहिं शइ जे अगरि का ॿी शइ मथां हूंदी त उनखे असां हुते अबव यूज़ कंदासीं लाइक द प्लेन इज़ अबव द क्लाउड्स पर स्पेस हुजे शर्त इहा त स्पेस विच में हुजे त पोइ असां हुते अबव यूज़ कंदा अगरि का शइ घटि आहे हेठि आहे त उन ते असां बिलो यूज़ कंदा आहियूं फॉर एग्ज़ाम्पल द टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और द टेम्परेचर इज़ बिलो 0 इट मीन्स टेम्परेचर 0 खां हेठि आहे बिलो मीन्स हेठि Since and for maybe difference तव्हां ख़बर हूंदो त since is used for showing point of time and for is used for showing period of time अगर का point मिलियल आहे कंहिं टाइम जी त उते असां since यूज़ कंदा आहियूं पर अगर पीरियड मिलियल आहे अरसो मिलियल आहे वक़्तु मिलियल आहे त हेतिरा आवर्स हेतिरा डेज़ या हेतिरा ईयर्स उते असां for यूज़ कंदासीं हीअ डिफरेंस क्लियर आहे त अगर मॉर्निंग आहे या पॉइंट मिलियल आहे 2010 आहे पॉइंट मिलियल आहे अगस्त आहे मीन्स इट मीन्स इहा पॉइंट आहे हिकिड़ी जिते असां पोइ सिंस यूज़ था कयूं पर अगरि पॉइंट न आहे मिलियल जस्ट असांखे पीरियड मतिलबु अरसो ॾिनो वियो आहे उते असां फॉर यूज़ कंदासीं लाइक 3 इयर्स हाणे इहा ख़बर न आहे कहिड़ा 3 साल बसि अरसो आहे जेको असांखे मिलियल आहे 3 इयर्स उते असां फॉर यूज़ कंदासीं Now it is exercise time. We have talked about basics of prepositions. I hope you got some of the points. कुछ एक्सरसाइज कयूं था त उन में कुझु आइडिया क्लियर थी वेंदो एंड पार्ट 2 जेको आहे प्रेपोजिशन जो उहो बि जल्दी असां जेको आहे तव्हांखे अपलोड कंदासीं त तव्हां उनखे बि ॾिसी वठिजोसि Number 1 The boys looked here and there before running dash the road हाणे हिते सेंटेंस खे जॾहिं असां पढ़ूं था त असांखे ॾिसो हिकिड़ो आइडिया क्रिएट थी थो वञे त रोड आहे The boy looked here and there and then he ran across जॾहिं रोड मां सिधो जेकॾहिं असां उन रोड खे पार था कयूं त उते अक्रॉस यूज़ कंदासीं प्रेपोजिशन सेंटेंस नंबर 1 जेको आहे उन में असां प्रेपोजिशन अक्रॉस पुट कंदासीं नंबर 2 दे वॉक अप ऐं असां सम्झी आया आहियूं पढ़ी आया आहियूं त जॾहिं क्लॉक टाइम हूंदो घड़ियाल जो कोई बि टाइम हूंदो 7 o'clock 8 o'clock 9 o'clock त उते असां प्रेपोजिशन कहिड़ी यूज़ कंदा आहियूं 8 यूज़ कंदा आहियूं गुड सो सेकंड में असां 8 यूज़ कंदासीं Number 3 we play games dash spring now spring is a season and season ते असां कहिड़ी preposition यूज़ कंदासीं in यूज़ कंदासीं so we play games in spring there is need dash more houses हाणे हिते असां for more houses चवंदासीं या of more houses there is need of more houses या there is need for more houses इन में तव्हांखे ख़्यालु करिणो आहे त हिते असां there is need for more houses थींदो they have been cooking fish 2 hours हाणे इन में असांखे पीरियड ॾिनल आहे मतिलबु का पॉइंट असांखे न मिलियल आहे त कहिड़ा 2 कलाक जस्ट 2 hours जो असांखे पीरियड मिलियल आहे सो सिंस यूज़ कंदासीं या फॉर त जॾहिं बि पीरियड मिलियल हुजे त असां हुते फॉर यूज़ कंदासीं The next is the cat was sitting dash the middle of the ground. We have just discussed this point that in middle हुजे त उते असां 8 हणंदा आहियूं सॉरी इन हणंदा आहियूं in the middle of the ground. जीअं असां हिननि फ्रेज़िस में पढ़ियासीं थोरो रिवाइज़ हिननि खे रिव्यू कयो त जॾहिं बि मिडिल हूंदो त इन द मिडिल in the big in the front of right so in the same way we were doing this exercise let's jump to the exercise now number 7 please come and meet me dash the airport and airport station bus stop इन ते असां 8 यूज़ कंदा आहियूं
So please come and meet me at the airport. On the airport Nachavanasi. Number 8. Children have been waiting dash many days. Again, there is a period. So asaite for use kanasi for many days. We should walk dash the road. Road river इन तरीके सां road हुजे या river हुजे त असां उन ते असां along ॻणंदा आहियूं. We walk along the road, not on the road. Then the train went dash the tunnel. Tunnel आहे इन जे करे असां हुते through use कंदासीं. The train went through the tunnel. She was standing dash two chairs. We have already learned this point that when there are two objects or two things, we use between. बस शयूं आहिनि उन जे करे असां between. अगर more than two things हुजनि हा त पोइ असां हुते among use कयूं हा. हिते between use थींदो. The boy could not jump dash the river. Jump, so it's showing a position, a movement. So movement जे लाइ असां into use कंदासीं. The boy jumped into the river. The moon revolves around. हिते असां पढ़ियो आहे त जॾहिं हिकिड़ी शइ ॿी शइ जी चुधारी फिरंदी त हुते असां around use कंदासीं. I watched this movie on television. Okay, so in this way we have to see the sentences, and we have to think about the rule, and then we have to put the preposition. Preposition use करण में असांखे तमामु घणो ख़्यालु करणो आहे. And this was all about basics of preposition, and we will also discuss something more about this topic in the next video lecture. And be with us, stay connected. Thank you very much. See you in the next video.